हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स। व्यूवर्स, इस वीडियो में हमने एक पैसेज लिया है और उसी के ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। क्लास 9 की दूसरी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा, तो वहां से आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द लैंड ऑफ इंडिया displays great physical variations. Geologically, the peninsular plateau constitute one of the ancient land mass on the earth's surface. Clear? It was supposed to be one of the most stable land blocks. The Himalayas and the northern plains are the most recent landforms. Clear? From the viewpoint of geology, Himalaya mountains form an unstable zone. The whole mountain system of Himalaya represents a very youthful topography with high peaks, deep valleys, and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposits. The peninsular plateau is composed of igneous and metamorphic rocks with gently rising hills and wide valleys. Clear? Let's discuss MCQs based on this passage. First question is, the peninsular plateau is composed of, options are igneous rock or metamorphic rock or sedimentary rock or both 1 and 2. Answer is both 1 and 2. Peninsular plateau is composed of igneous rock as well as metamorphic rock. Next question is, the ancient landmass on Earth's surface is, options are peninsular plateau or Himalayas or northern plains or deep valleys. Answer is peninsular plateau. We just have read in the passage that peninsular plateau is the ancient landmass on Earth's surface. Next question is, the most recent landform are, options are northern plains or Himalayas or both 1 and 2 or none of these. Answer is both 1 and 2. Northern plains as well as Himalayas are the most recent landforms on the surface. Next question is, according to geology, the unstable zone is, options are Himalaya mountains or central highland or Deccan plateau or peninsular plateau. Answer is Himalaya mountains. According to geology, Himalaya mountains are most unstable zone. Next question is, landmarks formed of alluvial deposit is, options are South India or Deccan Plateau or Northern Plains or Himalaya mountains. Answer is Northern Plains. Deccan Plateau also comes under Northern Plains. So answer is Northern Plains. Next question is, very youthful topography is, options are Central Highland or Northern Plains or Himalaya mountains or all of these. Answer is Himalaya mountains. Himalaya mountains is most youthful topography. Its height is still increasing. That is all for today. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।